Is it started up? Okay, so first step is in the GitHub developer pack, we need a GitHub account. For a GitHub account, we need to go to GitHub website like github.com, right? Then we will click on this sign up button. This is a kind of normal process. So after that, its sign up page loads up and it is asking for email. So we will enter the email. Just a second. Okay, you will enter your university email, not this email, but your university email. Remember one thing, you need to put the university email only. If you want the GitHub developer pack, you can make your account with your personal email address, but you will not be able to access the developer pack with your personal email address. So that's why you need a university email. So this is my university email, my friend, like so we click on continue, and I will create a password, just a random password. It is saying it's okay, so the password is strong. Let's continue. Enter a username. Let me ask him what's the username he want. Let's say Azim Wakar. Is it available? Not available. Azim Wakar is not available, so we will paste one at the end, or some other. Okay, so the username we choose Azim Wakar. You can see it is visible that username is available. So you need to try some hit and try with the names. So next, click on the continue button. So it is asking, would you like to receive product updates via email? So we will say okay, yes, I can. You can send me. So continue. And next we will click on the start puzzle button, right? After clicking on it is pick the spiral galaxy. Most of the students get confused that how to pick a spiral galaxy. Among all these pictures, only one picture is like spiral. You can see a clear spiral in one of the pictures, like in this picture I can see. So I will click on it. It's a spiral. So here it's a clear, although there are spirals in other pictures too, but they are not that clear. This one is very clear. So I will click on it, and again the same. So it's give us a tick mark. Now I will recheck that everything is alright. Okay, email is alright, username is alright. So next click on the create account, right? It send a verification code to this email address. Okay, so this email address basically will be logged on your Gmail account. Like I have this already logged in Gmail account, right? You will go into the Gmail account, you will enter this email, university email, and then the password. If you do not remember the password, then you can go to the server room in our university that is just besides the library. Then you can ask them to reset your password. So they will reset the password. That's then you can easily log into the Gmail account. So we need this GitHub verification code, right? This is the verification code. I will copy it, and I will then paste it on here. So after pasting, next it will loads up a new screen, a kind of welcome screen. So it is asking how many team members will be working with you. You will say just me, because currently you are working on your GitHub account. So you are a student, click yes, continue. So these are kind of things that it is asking that whom you are interested in. Like you are interested in collaborative coding, automation, security, something. You can choose anyone. It is not necessary or kind of important, just a random. You can choose anyone, or you can change it later. So I tick all of these like kind. So next click on continue. Okay, so it loads up a new screen. Learn to ship software like a pro, etc. So here you are.
it is giving you two options, like it's free and get additional student benefit. Because we are student, we are registering with a student email, we can apply for student GitHub student benefits, GitHub students benefit. Click on it and it will load a new screen. Or this is the GitHub student developer pack. So as you can see, it is not signed in, right? So first you need to sign in. Click on sign in button, it will automatically sign you. Okay, it automatically signed you in. So next you go here on the student and on the second student developer pack, right? Click on it, student developer pack. Now it is asking, are you a student? The student developer pack is only student that are age 13 or older. You can say yes, I'm a student. Click on it. Okay, then it asks you for your location. Basically it checks that you are on the legit countries, because they have a list of countries. For those countries they will give the developer pack. Some restricted countries will not, students will not be able to get developer pack. So click allow, it will access location. Okay, so basically I turned it off into my personal computer setting. Give me a second, I will turn it on. Okay, developer, that's okay. Now it error goes away. So you need to scroll down. Okay, when you scroll down a bit, then that's where it's already registered, because our university is already been registered with GitHub. So we just do not need to do any extra steps. We are just ready to go. So here is the thing, they ask that how do you plan to use. You can enter your answer, like I will say that I will do some community work and use resources for personal work. You can write anything that you want. So this is not kind of step that they check. Basically now it is as per my experience or knowledge, now it is totally automated. So a bot will like make this account. So you can feed anything, but try to keep it a shorter and legit. So let's give it a continue button. Okay, so now it is asking upload proof of your academic status. So scroll down a bit. Here it is asking take a picture. We can upload a picture, but the thing is that it is required two format, the .jpg and .png. Let me check that it can upload the PDF file as well. No, so my friend just gave me a PDF file. I will convert it into the JPG file. Just a second. Okay, I'm just taking the screenshot. Okay, so here we are. I just copy it and like paste it. Okay, so it's just uploading the screenshot, right? We will give it some second to upload, and once it's uploaded, so you can click process my application. Click enter. So running a pre-check on your application, it will show you that. And next it's thanks for submitting. So be sure, it's saying be sure to check the email. If you do not hear within the hour, you will receive an email in less than 4 days. So basically it is saying that you will receive the confirmation within hour, or if not, then you will definitely receive within 4 days. So by how many tries I've kind of done 3 tries, and it just give the confirmation within 10 to 15 minutes. Let's check github.com. Okay, so it's the account that we just made up, Azim Vakar 1, and currently it is showing nothing. And similarly on the developer pack, it is not showing anything. Let's check the okay, the GitHub Education sends us an email. Okay, welcome to the global campus, thank you for joining GitHub global campus. Okay, this is a kind of a confirmation email. Okay, let's check, have you received our developer pack or not? Here we go.
we have received our developer pack. That's all. That's the process. That so simple process, you need to just follow it. The video will be shared to you. If you do not remember any step, you can see. Okay, let me show you how many things you can get. पहले अगर आप देखें तो सबसे पहले आपको कैनवा दिखा रहा है कि कैनवा का 12 महीने का एक्सेस सब्सक्रिप्शन कैनवा प्रो का आपको मिल जाएगा। और इसी तरह नेम चिप का, माइक्रोसॉफ्ट एजर का, name.com की डोमेन नेम, जेटब्रेन के लाइसेंस, ये जेटब्रेन अगर मतलब मेरे तो पर्सनली बहुत इसका यूज़ रहा है। लाइक पाईचाम का मैंने जो प्रीमियम वर्जन है वो इसके थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट हासिल की है। और ये कैसे हासिल कर सकते हैं, इसके लिए बहुत सिंपल प्रोसेस है। यहाँ पे बल्कि नीचे लिखा भी हुआ है, गेट एक्सेस बाय कनेक्टिंग योर गिटहब अकाउंट ऑन जेटब्रेन। मैं सिर्फ आपको शो करता हूँ, करके नहीं दिखाऊंगा। अगर आप इस पर क्लिक करोगे ना गेट एक्सेस के ऊपर, तो ये जेटब्रेन की ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जाएगा। लाइक तो यहाँ पर आपने जाके क्या करना है, अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और उसके बाद आपने यही अपना गिटहब वाला अकाउंट, जो यूनिवर्सिटी वाला अकाउंट है, यही आपने वहाँ पे अपलोड कर देना है। तो उसके बाद जो सेम प्रोसीजर आप फॉलो करते रहना, और उसके बाद आपको ये ईमेल के थ्रू आपको बता देगा कि आपकी एक्सेस मिल गई है, और आपके यहाँ पर लाइसेंस भी शो हो जाएंगे। बेसिकली ये लाइसेंस आपको प्रोवाइड कर देगा। और सिमिलरली डिजिटल ओशन है, यहाँ पर आपको $100 तक का एक्सेस मिल सकता है। name.com की डोमेन, माइक्रोसॉफ्ट स्टूडियो, बूटस्ट्रैप स्टूडियो, ये प्रीमियम है, इसकी भी एक्सेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी क्योंकि आप स्टूडेंट हो। एजुकेटिव बहुत अच्छी वेबसाइट है, यहाँ पर बहुत प्रीमियम किस्म के कोर्सेज अवेलेबल हैं, और आपको इसकी 6 महीने की एक्सेस मिल सकती है। देखो गेट 6 मंथ और 60+ कोर्सेज इसमें आपको मिल जाएंगे। सिमिलरली गिटहब पेजेस, आप यहाँ पर अपने वेबसाइट्स को लाइव कर सकते हो। ये गिटहब आपको एट द सेम टाइम आपको डोमेन नेम भी प्रोवाइड कर देगा और होस्टिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड कर देगा। अगर आपको नहीं पता ये डोमेन नेम और होस्टिंग सर्विसेज क्या होती हैं, तो मैं आपको छोटा सा इसका ब्रीफ सा बता देता हूँ। जब भी आप वेबसाइट बनाओगे ना, तो आपने उस वेबसाइट को इंटरनेट के ऊपर अपलोड करना होता है, ठीक है। इंटरनेट के ऊपर एक किस्म की आपने जगह पहले ख़रीदनी होती है जहाँ पर आप अपनी कोई वेबसाइट अपलोड कर सको। तो जो वो जगह ख़रीदते हैं ना, उसको हम कहते हैं होस्टिंग सर्विसेज, ठीक है। अब वो जगह तो आपने ख़रीद ली है, अब वो जगह पे जब घर बनाना, घर का एक एड्रेस भी तो होना चाहिए ना, ताकि हमें पता हो कि यार उस जगह पे इसका घर तो है, उसका एड्रेस नंबर ये है, ठीक है। लाइक लाहौर के अंदर इसका घर है, हमें ये पता चल गया, बट एड्रेस नंबर भी तो पता हो ना। तो वो जो एड्रेस नंबर होता है वो होती है बेसिकली डोमेन नेम। और ये था बेसिकली डोमेन और होस्टिंग सर्विसेज का एक बेसिक सा, जो यहाँ पे देख सकते हो अपने में। और ये देखें अभी यहाँ पर है, इसको बस स्क्रॉल करते जाएं। डाटा कैम्प की आपको एक्सेस मिलेगी, जिसने पाइथन सीखनी है, डाटा के बारे में सीखना है, डाटा एनालिसिस के, मशीन लर्निंग के बारे में। डाटा कैम्प बहुत अच्छे रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, राइट। साउंड आ रहा है सबको? ओके, लेट मी चेक। देयर वाज अ मैसेज, ओके, यस। सो किसका क्वेश्चन था? साउंड आ रहा है? ब्रदर आप काइंडली दोबारा रीज्वाइन करके चेक कर सकते हैं, साउंड आएगा इंशाल्लाह ना आपको। ओके, सो अभी मैं बता रहा हूँ, लाइक आप देख लें, फ्रंट एंड मास्टर, किसी ने फ्रंट एंड सीखनी है, वेबसाइट 6 महीने का एक्सेस है। गिट लेंस, आइकन स्काउट, ये देखें, डाउनलोड 60 प्रीमियम आइकन्स पर मंथ फॉर 1 ईयर। सिमिलरली यहाँ पर इतनी चीज़ें हैं जिसका हमें पता ही नहीं है ये भी है क्या। लिटरली मुझे नहीं, मेजॉरिटी चीज़ों का मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरी वो डोमेन नहीं है। तो जब जो पर्टिकुलर डोमेन के बंदे, उनके लिए भी एक बहुत बेनिफिशियल है। लाइक स्ट्रीम यार्ड, अगर किसी ने स्ट्रीमिंग करनी है उसके एक्सेस मिल जाएगी। सिमिलरली टेस्ट मेल ऐप है, मोंगोडीबी का एक्सेस है, $50 मिल जाएगा। अभी इसी तरह आप स्क्रॉल करते जाना। ये ट्विलियो कि आपको ये API है बेसिकली, जब आप वेब में या फिर थोड़ा एडवांस अपना लेके जाएंगे ना कैरियर, तो वहाँ पे APIs के अंदर आप काम करेंगे, तो तब आपको जब पेड खरीदनी पड़ेंगी ना, तब आपको पता चलेगा ये किस तरह ये गिटहब डेवलपर पैक हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है। ओके, एक और बंदे का सेम इशू है, लेट मी चेक। ओके, साउंड आ रहा है? इत्साम, कैन यू प्लीज़ कंफर्म कि साउंड क्लियर आ रहा है? साउंड इज़ क्रिस्टल क्लियर। ओके, साउंड इज़ क्रिस्टल क्लियर। ब्रदर जिसको इशू आ रहा है काइंडली वो रीजॉइन करके चेक कर लें, मे बी आपका इशू रिजॉल्व हो जाएगा।
ओके सो अब यहाँ पर इंटरव्यू के का दिस इज़ अ गुड वेबसाइट दाओ. अगर किसी ने अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है लाइक 6-7 सेमेस्टर या 8 सेमेस्टर का, तो वो यहाँ पर जाके अपनी प्रिपरेशन कर सकता है. प्रीमियम रिसोर्सेज सिमिलरली बस आप स्क्रॉल करते जाओ. मैं बता रहा हूँ कि ये 200 के क्लेम करता है गिटहब खुद ना कि 200 के की ये है. तो ये आप सिर्फ स्क्रॉल करते हो, जो मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स आपको पता भी नहीं है, मुझे भी नहीं पता, बट दीज आर द रिसोर्सेज जो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं सिर्फ स्टूडेंट होने की वजह से. लाइक दीज मच थिंग्स. लॉग DNA, अगर कोई क्लाउड नेटिव के अंदर जाता है तो उसके बारे में भी ये बड़ी अच्छी वेबसाइट है लॉग DNA. ओके सो दीज मच रिसोर्सेज यू कैन गेट. सो जो अब हमारे जैसे स्टूडेंट्स के लिए अच्छे हैं वो तो ऊपर हैं, ताकि जो मेजर वेब के रिलेटेड है वो सारे ऊपर है. सिमिलरली यहाँ पर इन्होंने स्पेसिफिक एक बनाया हुआ है, किसी ने वेब का सीखना है, इंट्रो टू वेब, उनके लिए एक स्पेसिफिक डोमेन बनाई हुई है. वहाँ पर जाके वो रिसोर्सेज एक्सेस कर सकते हैं. किसी ने इवेंट होस्ट करना है या इवेंट बनाना है तो उसके लिए अलग रिसोर्सेज हैं. तो ये वो रिसोर्सेज थे जो हमें एज अ स्टूडेंट गिटहब प्रोवाइड कर रहा है. बेसिकली गिटहब माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी, ये पहले एक इंडिविजुअल कंपनी थी. 2008 में किसी डेवलपर ने बनाया था, बट माइक्रोसॉफ्ट ने रिसेंटली इसे ख़रीद ली है. सो कहने का मकसद ये है कि मैं बता रहा हूँ कि दैट मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ are providing the free resources to student, but Microsoft is the one company that is providing the way too much resources for the student, like 200k from GitHub only. Similarly, if you want Azure access, Azure is a kind of a cloud platform where you can run your virtual machines, you can run your websites, you can even create some other cloud features there. For that you need some credit, like $100 are of the credit are free for the students, and this is too much. Like this resources will be for 1 year. Simply you just need to click on it and follow the procedure with your university email. Remember one important tip, this is very important tip. Always in all of these resources, if you want to access any of these resources, use your university email, the email that is registered with this GitHub account. Okay, so if you use your personal Gmail or other GitHub account, then those resources will not be available for you. Only use the university email with whom you register for the GitHub developer pack. Okay, this is the GitHub developer pack thing. Let's continue to the next thing. We completed sign up, we completed developer pack. So next I will show you the GitHub interface, that how it looks, what is the GitHub interface. So this is my friend interface. Like this is total you can say it's clear, it's empty. We will kind of fill it. Okay, let me show you mine, how it looks in my GitHub. Okay, just delete these things. Okay, if we go here and your profile, basically it show my friend's profile. So now you can clearly see it is giving you a pro tag because you are a GitHub developer pack student, right? Before that there will be no pro tag. This pro tag is kind of fancy tag, right? It is attractive. Okay, so my friend's profile will look like this. On the other hand, if you see my profile, right, so it will look like this. Okay, all of the things that are you are seeing here, I'm Abdul Rahim, like this thing, connect with me, these like you can say pages or things you can see here, these are basically being done in the markdown language. There is a markup language, there is a markdown language. So GitHub use markdown language. I will do a session about markdown language if you are willing, where you will know how to create all of these things, because they are fancy. If someone visit your profile, then he or she will definitely be attracted by this fancy stuff, because it gives a clear look that you are a kind of a pro in GitHub. You know
something serious. But on the other hand, if you do not want to learn markdown language, then there's converter, markdown online maker. If you say something similarly, sir, online markdown like editor, you will just paste things here, it will automatically create this markdown visual. So this is a feature, but here you can see you are only putting 2 hash, and here is being bold. So but I mean to say that this all things is being done by markdown language. And this is the GitHub action. Like it shows every single step I made in the last few days or years. First step is I merged a pull request. In reviewing a pull request, there is a repository then where I merged something. Similarly, I commented at this repository, I closed a pull request in PyTorching, and all these things. And if you scroll a bit, then you can see all of these repositories that I currently have. And if you scroll a little bit, then this green marks is showing that these are the days I have contributed, I have done something sorry, on the GitHub. Okay, so that's a basic your profile. So next, move forward to issues and the pull request thing that I have told you before. Okay, so we just click on any repository, like Boda is one of my friend, and we will go to his repository. And here's a PyTorch Lightning, one of his very famous repository. Okay, so if you see, this is the repository. This is all the work he has done on the repository. Like these are the folders, and here's the files like YAML file, and there is a text file. This is a Python file. The .py mean Python. Similarly, .yml mean YAML, and this thing is a README. Okay, this thing, all the thing is README. README is very important in any GitHub repository. README is something that tell other person who are not familiar with your projects that what is actually your project is doing. Okay, so README is very important because it tells every single thing in visuals or in words that what you have done with your code, what is actual functionality of your code. So this is the README file. We will I will tell you how to create all this stuff in a bit of second, don't worry about this. So I mean to say that if you want to contribute any project, or if you go to a company in future, inshallah, then these are kind of repositories. This is the work they have already done. Like suppose you have been hired in this company, PyTorch Lightning, so they will say, okay, there is something here in the Docker folder, and you need to update that modules. So that's a complete repository, and for the one module you need to see every single files, because they are interlinked. Most of their functionalities are interlinked, so you need to scroll each of these. Like if I click on setup.py, it will show all the code that has been written in this particular file. As you can see, this function and etc. These are the comments, inline comments. This is the kind of thing. So okay, let's move forward. What is issues and pull requests? How you can contribute to open source? Okay, that's where it begins. First of all, you need to go to issues. Okay, here you can see all of the issues. The issues mean these are kind of bugs or some functionalities that need to be approved in this particular repository. So the owner and some other persons created these issues, so that the team of that repository or people like us can contribute to such repositories. Like I will look upon all these issues. This is if you are the if you are newbie, then I will advise you to do the document thing first. Pick up those issues that has a label docs. So because these kind of issues are very easy and simpler to solve as a students, because we if you go here, bug and checkpointing, this is some serious issue. Like it needs a particular very high knowledge,
in that particular language, but as a student we do not have. So we will start with documentation, and by doing the documentation we will scroll all the code bases. So when we see the code bases with while doing the documentation, we will get a little bit how know that okay, this thing is doing that, this thing is doing that. So बेसिक यही मकसद है कि ना जब आपने जाना है लेबल्स, अगर किसी भी इश्यूज़ के ऊपर जाना है तो सबसे पहले आपने चेक करना है एज अ स्टूडेंट। मैं तो यही सजेशन दूंगा कि ना आपने वो लेबल्स पकड़ने हैं जिनके ऊपर डॉक्यूमेंटेशन का हो, या जहाँ पे लिखा हो गुड फर्स्ट इश्यूज़, राइट। गुड फर्स्ट इश्यूज़, डॉक्यूमेंटेशन, और एक और लेबल है कि बिगनर फ्रेंडली, इसी तरह का एक लेबल होगा, यहाँ पर फ़िलहाल नहीं है। तो वो इश्यूज़ को आप पकड़ो क्योंकि उनके अंदर बिल्कुल सिंपल काम रिक्वायर होता है। अभी मैं डॉक्यूमेंट का खोलता हूँ ना, तो यहाँ पर देखते हैं क्या इशू में है। सो ये किसी थर्ड पर्सन ने क्रिएट किया कि दिस लिंक सीम्स डेड, ये वाला लिंक है तो ये डेड है, तो काइंडली इसको अपडेट कर दो। तो ये डॉक्यूमेंटेड वर्क है कि आपने ढूंढना है कि ये इश्यूज़ कहाँ, ये लिंक कहाँ पर है और इसके अगेंस्ट कौन सा लिंक बेहतर। आप यहाँ पर कमेंट करोगे, लाइक ये देखो इन लोगों ने कमेंट किया हुआ, ये पूछ रहे हैं बेसिकली कि कौन सा लिंक है जो हम इसकी जगह अपडेट करें, राइट। आप यहाँ पर जाओ नीचे, यहाँ पर कमेंट करो कि ओके आई कैन सोल्व दिस इशू, मुझे इशू समझ लग गई है, तो मुझे बस इतना बता दो कि ये इस जो लिंक है ना इसकी जगह कौन सा लिंक अपडेट करना है। मुझे पता है ये लिंक ना उस फाइल के अंदर है, मैंने ये देख ली है, तो आप बस मुझे बताओ कौन सा लिंक अपडेट करना है। तो आप वो उस फाइल में जाके इस लिंक की जगह नया लिंक अपडेट कर दोगे, और उसके बाद जब आप अपडेट कर दोगे ना तो आप फिर अपडेशन कैसे इस रिपॉजिटरी के अंदर आप पुश करोगे। लाइक आपने अपनी तरफ से काम तो कर दी है, वो लिंक भी वर्किंग है, आपने अपना कंट्रीब्यूशन भी कर दिया है। अब आप चाहते हो कि वो कंट्रीब्यूशन अब इनके प्रोजेक्ट के ऊपर मर्ज हो जाए, इनके प्रोजेक्ट के अंदर शामिल हो जाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए बेसिकली पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करनी पड़ती है, राइट। आप पुल रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करोगे और यहाँ पर जाके न्यू पुल रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर अभी आपने वो कह रहा है कि आपने बताओ किस ब्रांच से करना है। अभी फ़िलहाल क्योंकि हमने कोई अब इसके ऊपर काम नहीं किया तो हम अभी फ़िलहाल कोई पुल रिक्वेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर जब आप कोई इशू को सॉल्व कर लोगे ना तो ये पुल रिक्वेस्ट वाला ऑप्शन ऑटोमेटिक वहाँ पर आ जाएगा। अब मैंने सपोज करो इसी इशू को सॉल्व करना है, अब मैं इस इशू को कैसे सॉल्व करूँगा, अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपने जाना है फोर्क, यहाँ पर क्लिक करना है। फोर्क पता क्या करता है, बेसिकली फोर्क क्या करता है कि ये पूरी की पूरी रिपॉजिटरी को ना, अभी ये यहाँ पर अपलोड हुई है, पाईटार्च लाइटिंग के ऊपर अपलोड हुई है, ये पूरी की पूरी रिपॉजिटरी को आपके गिटहब अकाउंट के ऊपर अपलोड कर देगी। वो रिपॉजिटरी आपकी ज़ाती रिपॉजिटरी बन जाएगी, आप उसके अंदर जो मर्जी चेंजेस करो, जो मर्जी उसके ऊपर ख़राबा करो, तो वो आपके हद तक ही रहेगी, वो इस मेन रिपॉजिटरी को इफेक्ट नहीं करेगी। तो फोर्क कमांड बेसिकली ये करता है कि इस रिपॉजिटरी को फोर्क कर देता है आपकी अपनी पर्सनल गिटहब के ऊपर। अब देखो मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ, अभी यहाँ पे लिखा हुआ है पाईटार्च लाइटनिंग, ठीक है। अब मैं जैसे ही फोर्क पे क्लिक करूँगा ना, देखना यहाँ पे नाम चेंज हो जाएगा, एक्स फारूकी, ये मेरा नाम अब शो होके आ रहा है, एक्स फारूकी और पाईटार्च लाइटनिंग। अब ये मतलब कि मेरी रिपॉजिटरी बन गई है। अब ये सारा काम मतलब मेरा तो नहीं हो गया है, लेकिन अब मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ। अब मैंने किसी भी चीज़ को अपडेट करना है मैं कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं setup.py पे जाऊँगा, ये मैं जितनी मर्जी लाइन यहाँ पर डिलीट कर दूँ, यहाँ पर एडिट वाले बटन पर जाके, राइट, मैं जितनी मर्जी लाइन यहाँ पर डिलीट कर दूँ, कोई मुझे रोकने वाला नहीं, मैं पूरा का पूरी फाइल उड़ा दूँ, कोई रोकने वाला नहीं है। बट इससे क्या कि इससे जो मेन रिपॉजिटरी है ना उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। फोर्क कमांड ये करता है कि आपके अकाउंट के अंदर, आपके गिटहब के ऊपर एक उसकी कॉपी बना देता है, जहाँ पे आप कोई भी पंक्शन जिसे सिंपल वर्ड में कह सकते हैं आप ले सकते हो, राइट। तो ओके, अब हम यहाँ पर जाते हैं पाईटार्च लाइटनिंग पे। सो द थिंग इज़ दैट अब यहाँ पर आप कुछ भी काम कर सकते हो। अभी जैसे कि कल मैं आपको बता रहा था ना ब्रांचेस, अभी यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, ये देखिए ये सारी की सारी ब्रांचेस हैं, हर काम के लिए डिफरेंट ब्रांच बनाई गई है, सारा काम मास्टर के अंदर नहीं किया गया। अब किसी ने ये देखो ऐड रीलोडिंग का फीचर ऐड करना था, उसने एक अलग ब्रांच बना दी है, उसके अंदर वो सारे फीचर्स ऐड कर दिए हैं। सिमिलरली किसी ने ये बग फिक्स करना था सिग्नल का, उसने अलग ब्रांच बना दी है। इसी तरह हमने भी अपनी ब्रांच बनानी है, यहाँ पर जाना है ब्रांच, और यहाँ पर लिखूँगा मैं कोड, और सिमिलरली मैं लिख सकता हूँ डॉक्यूमेंटेशन वर्क। ओके, ब्रांच का नाम थोड़ा होना चाहिए, लेजिट होना चाहिए, कोई अपनी तरफ से नहीं लिख देना कि मेरी डॉक्यूमेंटेशन, ये इस तरह का नहीं, थोड़ा लेजिट नाम हो।
ओके। सो डॉक्यूमेंटेशन की स्पेलिंग गलत है, इसको हम चेक कर देते हैं, डॉक्यूमेंटेशन सिंपल रखते हैं। और यहाँ पर जब हम इंटर मारेंगे ना, यहाँ पे लिखा हुआ है बल्कि क्रिएट ब्रांच, हम इस पर क्लिक करेंगे तो एक अलग ब्रांच बना देगा। सो वी आर इन दिस डॉक्यूमेंटेशन ब्रांच। आप देख सकते हो ये रिपोजिटरी वैसी की वैसी है, बस हम ब्रांच एक डिफरेंट कर चुके हैं। पहले मेन के अंदर थे, अब डॉक्यूमेंटेशन में है। अब ब्रांचेस का अगर मैं आपको एक थोड़ा ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो जाए, सिंपल सा बता दूँ ना, ब्रांचेस हम क्यों यूज़ करते हैं, मेन में क्यों नहीं सारा काम करते। इसलिए नहीं करते क्योंकि ना हमने डिफरेंट फीचर्स के ऊपर काम करना होता है। अगर मेन के ऊपर ही करते रहेंगे ना तो बास्ट टाइम क्या होता है कि हम कुछ गड़बड़ कर देते हैं, तो वो गड़बड़ को फिर रीसेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन के अंदर मैंने कोई गड़बड़ कर दी है ना, मैं क्या करूँगा, पूरी की पूरी ब्रांच उड़ा दूंगा, कोई इशू नहीं आएगा मेरी मेन के ऊपर ना, मेन मेरी बिल्कुल स्टेबल रहेगी। तो इसलिए हम एक अलग ब्रांच बनाते हैं ताकि कोई ईजी काम हो जाए और कोई इशू भी आए तो हम एट द ब्रांच ही पूरी उड़ा देंगे, हमें कोई बाद में मसला भी ना हो। तो यहाँ पे सपोज करो अभी मैंने काम करना है इसकी पाइथन की, इसकी फाइल के अंदर ना मैं जाकर यहाँ पर कुछ अपने लाइन ऑफ कोड लिख देता हूँ। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे एडिट पे क्लिक करना है, राइट। ये बेसिकली मैं अभी गिटहब के ऊपर ही कर रहा हूँ, लेकिन इसकी अच्छी अप्रोच होती है कि आप इसको कमांड लाइन के अंदर करें, लाइक अपने किसी कोड एडिटर के अंदर करें ना। और कोड एडिटर के लिए करने के लिए वो मैंने आपको कल बताया था किस तरह इसको क्लोन करना है गिट की कमांड के थ्रू, या आपकी रिपोजिटरीज के अंदर चला जाएगा। तो फ़िलहाल अभी नहीं कर रहे, लेकिन मैं सिर्फ दिखाने के लिए, लाइक ये देखो मैं अभी यहाँ पर लिखता हूँ, चलो सिंपल ही लिख देता हूँ, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ओके, सो ओके प्रिंट हेलो वर्ल्ड मैंने लिख दी ये ना कमांड। अभी थोड़ी इसको उसके अंदर लिख देते हैं। ओके, अब मैं यहाँ पर नीचे जाऊँगा, राइट। यहाँ से आप लोगों का कोड देख सकते हो कि क्या क्या काम हो रहा है। शुरू में नहीं, बेशक मुझे नहीं समझ लग रही थी यार ये क्या कर रहा है, मुझे तो पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। आहिस्ता आहिस्ता समझ लगती है। इन्होंने क्या, आपको एक चीज़ अच्छी बताता हूँ, इन्होंने हर एक ना, ये देखो ये इसने एक नया फंक्शन बना रहा है, कोई भी बना रहा है ना चीज़, तो उससे पहले इसने ये डॉक्यूमेंटेशन लिखी हुई है, इनलाइन कोड में बताया हुआ है कि भाई ये मैं काम करने जा रहा हूँ, ये काम हो रहा है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, आपको अगर कोई न्यू भी होता ना उससे भी थोड़ी बहुत समझ लग जाती है, जैसे पाइथन थोड़ी बहुत आती है। अच्छा, मैंने ऊपर चेंजेस कर दी। ओके, अब यहाँ पे मैं कमिट करूँगा, ये वही कमिट है जो कल हमने कमांड लाइन के अंदर किया था, राइट। अभी यहाँ पर ये कमिट हम कर सकते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के थ्रू। यहाँ पर मैं मैसेज लिख सकता हूँ, लाइक आई क्रिएटेड हेलो वर्ल्ड लाइन, और यहाँ पे कमिट चेंजेस कर दूँगा। अब एक चीज़ नोटिस करना, जैसे ही मैं कमिट चेंजेस करूँगा ना, अभी ये इसके ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा यहाँ पर, ये देखो हेलो वर्ल्ड। अब ये इस फाइल का हिस्सा बन गया है, लेकिन ये फाइल अभी मेरी रिपोजिटरी के अंदर ही पड़ी हुई है, ये मेन रिपोजिटरी के ऊपर नहीं गई। ओके, अब जैसे ही हमने अब ये चीज़ मज़ेदार जो मैं पहले बताना चाहता था, जैसे ही मैंने चेंज कर दिया ना, साथ ही ऑप्शन नया आ गया कि डॉक्यूमेंटेशन है ना वो इसके अंदर कुछ चेंजेस हुई है, ये आप पुल रिक्वेस्ट भेजो उनको मेन रिपोजिटरी के अंदर, इसको मर्ज करवाओ। तो हम यहाँ पे पुल रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे जब आप कोई भी चेंज कर दोगे ना। अभी तो मैंने रैंडम आपको सिर्फ हल्का फुल्का बता रहा हूँ कैसे ऐसे होता है। अब यहाँ पर देखो ये ऑटोमेटेड लिख के आ गया है। ओके, व्हाट डज दिस PR डू, यहाँ पर आपने, ये बेसिकली कमेंट है, मार्कडाउन लैंग्वेज कमेंट यहाँ ऐसे होता है ये, और इस एरोज़ के दरमियान जो कुछ भी है वो कमेंट होता है। तो ये कमेंट में पूछा हुआ है प्लीज़ इंक्लूड अ समरी ऑफ चेंजेस, आपने क्या क्या किया है, प्लीज़ आल्सो इंक्लूड रेलिवेंट मोटिवेशन और कॉन्टेक्स्ट। बेसिकली आपने बताना होता है कि ना मैंने ये चेंजेस की हुई हैं और ये कोड मैंने चेंज किया है क्योंकि फ़लाने कोड के अंदर ये बग आ रहा था और इसलिए मैंने ये सारा कुछ चेंज करके पुल रिक्वेस्ट भेजी है। और यहाँ पर आप बताओगे ये कौन सा इशू, अगर कोई इशू हो पहले ही क्रिएट, आप बताओगे ये फलाना इशू, ये पुल रिक्वेस्ट उस इशू को सॉल्व कर देगी। ओके, तो बिफोर सबमिटिंग आपने ये सारी चीज़ों को टिक मार्क करना है। ओके कि ये डिस्कस्ड हुई है गिटहब इशू के ऊपर, या फिर किसी ने आपको उसके बारे में कहा, या आपने अपनी तरफ से ये पुल रिक्वेस्ट भेजी है, और उसके बाद आपने यहाँ पर जाके क्रिएट पुल रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक कर देना है, राइट। अभी नहीं मैं कर रहा क्योंकि अभी उनकी नोटिफिकेशन चला जाएगी, मैंने तो अभी रैंडम ही चेंजेस किए हैं। तो जैसे आप क्रिएट पुल रिक्वेस्ट पे क्लिक करोगे ना, तो पता क्या होगा, मैं दिखाता हूँ, ये मैंने काम किया हुआ है ऑलरेडी। जैसे ही आप यहाँ पर चेंजेस करके क्रिएट पुल रिक्वेस्ट करोगे तो ऐसे स्क्रीन पे चला जाएगा, लाइक
यहाँ पर ओपन लिख के आएगा आपके टाइम पे, मेरा तो भी मर्ज हो गया ना उनके प्रोजेक्ट के ऊपर, आपके टाइम पे ओपन लिख के आएगा। ये देखो मैंने ऐसे फिल किया हुआ है, बिफोर सबमिटिंग मैंने टिक मार्क किया हुआ है कि हाँ ये मैंने इशू पहले क्रिएट था, ये था। और ये चौथा मैंने पॉइंट लिखा कि मैंने कुछ एक्स्ट्रा इसके अंदर टेस्ट किए हैं अपनी तरफ से, तो मैंने कहा भाई मैंने कोई टेस्ट नहीं किया, ये टेस्ट आप करो। तो ये फिर लिखा है व्हाट डज़ दिस पी आर डू, मैंने लिखा है कि भाई ये PR इस इशू को रिजॉल्व करती है। और आपके कोड बेस में जितने भी लिंक्स थे ना, बेसिकली कुछ लिंक्स के अंदर एरर आ रहा था, वो रिप्लेस किए थे, तो वो कोड के अंदर जितने लिंक्स हैं वो सारे रिप्लेस हो गए। इफ़ एनीथिंग नीड्स टू बी करेक्ट लेट मी नो। तो ये ओके, उसके बाद ये सारी अब यहाँ पर पता क्या होता है, रिपोजिटरीज़ के अंदर बॉट्स होते हैं। सबसे पहले बॉट्स आपकी जो पुल रिक्वेस्ट है उसको चेक करते हैं। अब मैं दिखाता हूँ कैसे। यहाँ पर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करूँगा ना, यहाँ पर ये देखो ये मर्जीफाई बॉट है। उस बॉट ने सबसे पहले इस पुल रिक्वेस्ट को चेक किया कि इसके अंदर कोई ऐसा कोड तो नहीं मैंने इंसर्ट कर दिया कि जो उनकी रिपोजिटरी को क्रैश कर दे, ओके, जो उनकी रिपोजिटरी के अंदर कोई ख़राबियाँ पैदा कर दे या फिर कुछ गलत हो जाए काम। तो बॉट पहले चेक करता है। जब बॉट एक दफ़ा चेक करेगा वो वेरीफाइड कर देगा, फिर उसके बाद वो जो इनका ऑनर है ना, ऑथर, या जो इनकी मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव टीम है, उसको ये पुल रिक्वेस्ट भेजेगा कि भाई ये मेरी तरफ से ओके है, अब आपने इसको रिव्यू करना है। तो ये उसका ऑनर था बॉर्डा, इसने फिर मेरी जितनी भी चेंजेस है ना उन सबको रिव्यू किया है। रिव्यू करने के बाद ये सारी चेंजेस दिखा रहा है। आप यहाँ पे क्लिक करोगे व्यू चेंजेस, वो बता देगा। ये मैं क्लिक करके भी एक मिनट नई लिंक में खोल देता हूँ। ओके, तो अभी लोड हो रहा है। ओके, ये नई ये कमांड्स मैंने चेंज की हैं, ये मैंने एडिशन की है कमांड्स की, ये मैंने रिमूव की हैं, ठीक है, ये मैंने न्यू एडिशन की थी। जो रेड के अंदर है वो मैंने डिलीट की थी, जो वाइट ग्रीन के अंदर है वो मैंने ऐड की हैं। सिमिलरली आप देख सकते हो ये सारा कुछ मैंने इनकी रिपोजिटरी के ऊपर चेंज किया है। लाइक दिस मच वर्क आई हैव डन। ये सिर्फ एक पुल रिक्वेस्ट के अंदर की है। तो सिमिलरली ये सारी मेरी उसको चेक करेगा कि मैंने जो चेंजेस किए हैं। उसके बाद ये फिर क्या करेगा, नीचे जाके ना मर्ज, इनकी रिपोजिटरी में मर्ज का ऑप्शन आता है कि ये कहेगा कि हाँ मेरी तरफ से भी ओके है। ये फिर यहाँ पर मैं दिखाता हूँ स्टार्टिंग में, ये टीम मेंबर्स हैं, ये रिव्यूअर्स हैं, ये फिर इन सबको भेजेगा कि भाई मेरी तरफ से भी ओके है, इस बंदे की तरफ से भी ओके है, ये बॉट की तरफ से भी ओके है, अब आप भी ओके कर दो। फिर वो सारे ओके करेंगे तो उसके बाद ये मेरी पुल रिक्वेस्ट मर्ज हो जाएगी। ये एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे काम करती है। जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन मतलब हमारे लोकल प्रोजेक्ट्स होते हैं वो तो सिंपली मर्ज कर देते हैं, वो ऐसे बॉट्स वगैरह के ऊपर नहीं जाते, वो सिर्फ देखते हैं काम हो गया और मर्ज हो जाती है। यहाँ पर अब मर्ज का टैग आ गया। अब ये इनकी रिपोजिटरी के ऊपर मर्ज है, वहाँ पर मेरे नाम से इनका काम चल रहा है। ओके, तो ये हो गया हमारा टास्क के। ओके, कोई इशू तो नहीं आ रहा। ओके, ये हमारा टास्क हो गया इशू और पुल रिक्वेस्ट का कि क्या होता है। अब मैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ, प्रोजेक्ट कैसे ढूंढना है एज अ न्यूबी। मैं फॉर एग्जांपल मैं न्यूबी हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे सिर्फ इंग्लिश आती है। अब मैं इसके ऊपर कंट्रीब्यूशन कैसे करूँ, मैं उन कंपनीज़ को अपना काम कैसे करके दिखाऊँ। हमने फोर्क कमांड भी कवर कर लिया, डॉक्यूमेंटेशन भी काइंड ऑफ कवर कर लिया, राइट। और अभी बस रह गया हाउ टू फाइंड प्रोजेक्ट्स। यहाँ पर मैं एक ना आपको छोटी सी टिप बताता हूँ प्रोजेक्ट ढूंढने की। बजाय इसके कि आप यहाँ पे किसी रिपोजिटरी को ढूंढो, लाइक माइक्रोसॉफ्ट को ढूंढो, फिर उनके इश्यूज़ को चेक करो कि यार इनमें से कौन सा इशू मेरे मतलब का है, फिर उस इशू में काम करो और बाद में पता चले वो इशू वैलिड नहीं है, जो क्लोज हो गया। तो इस सब हैजल से बचने के लिए एक ना टिप है या ट्रिक कह लो, मतलब थोड़ी एडवांस थिंग है। ये वैसे आपको मुश्किल से ही मिलती है, सर्च करने पे ही मिलेगी। ये भी मुझे मुश्किल से मिली थी, ये नॉलेज, पर्टिकुलर नॉलेज। सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। आपने जाना है यहाँ पर सर्च और जंप टू, इसके ऊपर क्लिक करना है और इंटर दबा देना है, ठीक है। यहाँ पर जाना है एडवांस सर्च के ऊपर, ओके। यहाँ पर आपने बस बाकी किसी को नहीं इतना कुछ छेड़ना, क्योंकि ये डिफरेंट चेक पॉइंट्स हैं। आपने बेसिकली क्या करना है, आपने यहाँ पर जाना है लेबल्स के ऊपर, विद दी लेबल्स में आपने रखना है गुड फर्स्ट, ये देखो ऑलरेडी लिखे हुए हैं, गुड फर्स्ट इशू, डॉक्यूमेंटेशन, इजी, और इस तरह के लेबल आपने चूज़ कर लेने हैं। 3 लेबल हैं, ओके। तो और इसके बाद आपने यहाँ पर वर्किंग लैंग्वेज आपने बताना है कि मैं किस लैंग्वेज के ऊपर काम कर रहा हूँ, मतलब मेरी इस लैंग्वेज की एक्सपर्टीज़ है, उससे रिलेटेड मुझे काम दिखाओ, राइट। तो अभी फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा पाइथन का हूँ, तो मैं पाइथन पे क्लिक करूँगा, ठीक है।
यहाँ पे हर लैंग्वेज है, लाइक जावास्क्रिप्ट आप कर रहे हो, जावास्क्रिप्ट है। अभी जो फर्स्ट सेमेस्टर के सेकंड के हैं वो C++ करते हैं, जावा करते हैं, लाइक एवरी सिंगल लैंग्वेज है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे स्क्रॉल करते जाओ, आपकी फेवरेट लैंग्वेज मिल जाएगी, ओके। तो यहाँ पर आपने जाना है, सर्च पे क्लिक करना है, ओके। सो 183 इश्यूज़ आपको दिखा रहा है, राइट। ये सारे इश्यूज़ वो हैं जो हर लोगों ने लेबल्स किए हुए हैं। ये देखो इनको लेबल्स देखो, डॉक्यूमेंटेशन है, इजी है, गुड फर्स्ट इशू है, ओके। तो ये जो ग्रीन डॉट है ना, ग्रीन डॉट यहाँ पे देखना है, काफ़ी के ऊपर ग्रीन डॉट है। ग्रीन डॉट का मतलब है ये इश्यूज़ ओपन है, ओके। इनके ऊपर आप काम कर सकते हो। जो पर्पल डॉट्स हैं ना, ये पर्पल कलर के, इनका मतलब है ये इश्यूज़ अब क्लोज्ड हो गए हैं, ये मर्ज्ड हो गए हैं, इनके ऊपर काम हो चुका है, ये ऑलरेडी मर्ज्ड हैं, राइट। ये ग्रीन है और ये और पर्पल आपने नहीं करना क्योंकि वो ऑलरेडी मर्ज हो गए, उनके ऊपर काम करने का फ़ायदा कोई नहीं। अब ये देखो, ये एक साइकिट लर्न की ऑफिशियल रिपॉजिटरी है और उनका इशू है, राइट। अगर कोई पाइथन या मशीन लर्निंग वगैरह के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज रखता है ना, तो ये इशू आप इसके ऊपर क्लिक करो, जाओ आज ही जाके, यहाँ पर इन्होंने पूरी डिटेल में बताया हुआ है कि इसकी इशू क्या है, आपने क्या करना है इसके ऊपर, ठीक है। ये सारा इन्होंने बताया हुआ है, आप इसको पढ़ लेना ये क्या क्या है और इसको स्क्रॉल करते रहना, ठीक है। सजेस्ट है पोटेंशियल अल्टरनेटिव फिक्स, तो उसके बारे में भी बताया है कि ये चीज़ें हमें चाहिए, और ये मज़ीद इशू के बारे में बताया हुआ है, राइट। तो ये पूरी डिटेल उन्होंने इशू के बारे में बताई हुई है। अब यहाँ पर एक बंदा आ गया, वो कहता है वर्किंग ऑन इट। उसने आते साथ ही मैसेज कर दिया कि मैं ना, मुझे इशू समझ लगी है, मैं इसके ऊपर वर्क करना शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। वो बस एक ना, जो एक किस्म का बताने के लिए हमजद बाकी लोगों को भी कि इसके ऊपर ऑलरेडी वर्क हो रहा है, तो इसको आप अभी ना करो, और ऑनर को भी बताने के लिए कि हाँ मेरे इस इशू पे कोई बंदा वर्क कर रहा है, राइट। तो इसी तरह नीचे लोगों ने भी कमेंट्स किए हुए हैं। लेकिन एक चीज़ आपने देखनी है, ये बंदा बेशक कह दे वर्किंग ऑन दिस, अगर आप भी जाके कह दोगे ना यहाँ पर कि मैं भी इस इशू को ओके। यहाँ पर एक और चीज़ है, ये इशू पहले क्लोज हो चुका था, ये उस बंदे ने काम कर दिया था, ये इशू मर्ज हो गया था, लेकिन इसमें फिर दोबारा कहीं पर दोबारा इशू आया, इसी वजह से ओपन है। ये देखो, ये सारी चीज़ें मर्ज्ड हैं। हम स्क्रॉल करते हैं, ओके, ये देखो ये दोबारा ओपन हो गया है, ये भी मर्ज हो गया था, ओके। रिसेंटली ये वाला ओपन है, तो ये इशू ओपन है। अभी इसके ऊपर किसी ने कोई कमेंट नहीं किया और ये 3 दिन पहले ओपन हुआ है, तो आप इस इशू को जाके देखो तो समझो कि इशू क्या है, ये इशू की डिटेल है, ठीक है, राइट। सिंपल है, आपने सिर्फ पढ़ना है, आपने ट्राई कर कोशिश करके देखनी है, राइट। शुरू में मुझे तो समझ नहीं लग रही थी, जब मैंने शुरू किया मैंने कहा यार ये पता नहीं क्या, ये तो बड़े बड़े लोग करते होंगे। मैंने जब ये काम किया था ना, ये आप लोग अभी यही कह रहे हो कि मुश्किल है, मैं भी शुरू में यही कह रहा था ये तो बड़े बड़े लोग करते होंगे जिनको बहुत ग्रिप होगी। लेकिन जब मैंने ना 1-2 घंटे इस के ऊपर वर्क किया तो मुझे समझ लगी तो ईजी है, मैं कर सकता हूँ, ईजिली कर सकता हूँ, ओके। सो दिस इज़ द थिंग। आप यहाँ पर आप कमेंट कर दो और जाके इशू को उसके ऊपर काम करना शुरू कर दो। अब सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर मैं बताता हूँ, जो लास्ट है कि अपनी वेबसाइट कैसे हम होस्ट कर सकते हैं। सो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर जाना है, क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक करना है। वेबसाइट फ्री ऑफ कॉस्ट होस्ट कर सकते हो, यहाँ पे वेबसाइट के अलावा कोई भी कोड अपना इसके ऊपर होस्ट कर सकते हो। क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक किया, यहाँ पर लिख दिया माई वेब, वो कहेगा ओके अवेलेबल है। पब्लिक के ऊपर जाना है, ऐड अ रीडमी फाइल, जो मैंने पहले बताया था कि रीडमी फाइल आपके प्रोजेक्ट के बारे में सारा बताती है। नेक्स्ट आपने क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक करना है, ओके। ये आपकी खाली रिपोजिटरी बना देगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जो आपकी वेब की फाइल्स पड़ी हुई है ना, index.html और CSS की फ़ाइल, आपने उसको यहाँ पर अपलोड करना है। आप उसको कमांड लाइन के थ्रू भी अपलोड कर सकते हो और आप इसको ये इस यूज़र इंटरफेस के थ्रू भी अपलोड कर सकते हो। कमांड लाइन वाला मैं वो अभी नहीं बताऊँगा, वो कल बता दिया था, तो वो वैसे भी थोड़ा सा ट्रिकी है। तो यहाँ पे हम जाएंगे सिंपली ऐड फाइल के ऊपर, क्रिएट न्यू फाइल पे और अपलोड फाइल पे क्लिक करेंगे। हम यहाँ पे अपलोड फाइल पे क्लिक करेंगे, ओके। यहाँ पर चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे तो ये अभी मेरी शो कर देगा। तो ये डे 2 जो हमने कल बनाई थी, राइट, इसके ऊपर क्लिक करूँगा और कंट्रोल के थ्रू इसके ऊपर क्लिक करके मैं इसे ओपन कर दूँगा। ये 2 फाइल्स क्या करेगा, मेरी रिपोजिटरी के ऊपर सेव कर देगा। यहाँ पर कमेंट करना है तो कर दो न्यू फाइल्स काइंड ऑफ, और कमेंट चेंजेस कर दो।
ओके, सो ये 2 फाइल्स आ गई हैं आपकी index.html. आप index.html पे क्लिक करोगे तो ये वेबसाइट के अंदर थोड़ा बहुत कंटेंट लिखा था जो हमने कल, और थोड़ा सा मैंने आज मॉडिफाई किया है. अब ये आपकी रिपोजिटरी रेडी हो गई है. अब इसको वेबसाइट के अंदर कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है. उसके लिए क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जाना है सेटिंग के ऊपर, देन यू विल गो हेयर ऑन द पेजेस बटन, राइट. Then you will click on the sources. So here is showing none, but you will click on the main branch, because all the thing that you have done, all the work that we have uploaded is in the main branch. So we click on the main branch. So this let all thing same, and click on save button. That's it. Now your website is live. This is the like domain name of your website. But one thing that I need to mention right now, if you click on this website right now, like I click on it, it shows 404 error. Okay, so this just give this a process of a couple of minutes, like 2 to 5 minutes. After 2 to 5 minutes, when you click on the same link, this will not give you error, but instead this will show you website, your website, the code that you have written. Okay, so if I go here and refresh, then you can see here GitHub pages pending. Just give it a minute, couple of minutes, it will be okay. Then it will change from pending to active. When so when it shows active and you click on it, then it will show you the actual website. Or if you want to check the link, then you can go to setting, again on the pages, and here is a link of your website. Let me show you mine that I have posted on it. Okay, here is the mine. Let me just GitHub, and sorry, my web, bro. Okay, my web, and the link is basically let me check, is this a link? Okay, this will show you all the details, but the link is here on the setting and the pages. There's one difference in here. You can see this is the different link than this link. Like it is showing azimwakar1.github.myweb, but here it is showing arfaruqi.xyzy, because I have purchased this domain name. Then I assign this domain name with this particular repository. So if you click on it, this is just a very basic simple page. If you click on the cheat sheet here, then this is the work that I have done, HTML cheat sheet, all the work, as you can see. So this is it for today. So if any of you have any question, you are good to go to ask. Let me unmute you all. Okay, I am allowing a mic to you, or you can simply text it if you do not want to ask in mic. So I will give you like 2 to 5 minutes. So if you have any question, feel free to ask. Even if it's very simple, you can ask, because if you do not ask, then you will not be able to explore yourself in a true manner. So any of you have any question about today's session, we have covered sign up, developer pack, issues and pull request, how to find the projects, how to fork a website, documentation, and how to host a website on GitHub. So if any of you have any question, you can ask, or we will wind up and end this meeting. Oh shit, brother, shit. I have not recorded this meeting. Oh, okay. 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 Sorry, कौन है? मैं गुलजमान बात कर रहा हूँ. Okay, brother. भाई मैं ये पूछने लगा था भाई, रिकॉर्ड किया, मैं यही पूछने लगा था आपसे. तो मुझे क्योंकि मैंने ये अभी भी ना मुझे कहते हैं ना, था ना जी मैंने वो देखा, क्योंकि जो आपने इश्यूज एंड पुल रिक्वेस्ट वाला टॉपिक था ना, मैंने क्योंकि वो देखना था. ओके. तो मैंने इसलिए पूछना था, क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट आया था, तो मैंने पूछना था क्योंकि मैंने वो देखना है. मैं वही क्लियर करता हूँ. पता क्या हुआ है, वो जिसे कहते हैं ना एकदम से जज्बात बदल गए. मैंने क्या किया, मेरी गलती ये हुई है, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं की यहाँ पर.
जैसे आप देख सकते हो। और मेरी अभी तबीयत होगी ख़राब कि मेरा फ़ायदा क्या हुआ यार, इतना घंटा मैंने भाषण दिया है और रिकॉर्डिंग नहीं की। सडनली मुझे याद आया कि ना मैंने रैंडम ही, वैसे मैं यूजली करता नहीं हूँ, रैंडम ही मैंने ना एक दूसरे सॉफ्टवेयर के थ्रू रिकॉर्डिंग कर रहा था। ओके सो लेट मी चेक, इट इज़ रिकॉर्डिंग ऑलरेडी, थैंक गॉड। ये रिकॉर्डिंग मैंने आगे भेजनी है माइक्रोसॉफ्ट वालों को, फिर उन्होंने जाके प्रूव करना है, तो मेरी बचत होगी एक किस्म की। तो डॉक्टर बच गए हैं, हमारे क्या कह रहे हो? मैंने कहा बच गए हैं यार बच नहीं, बहुत बच गए हैं। उन्होंने तो मीटिंग, अगर मीटिंग नहीं ना भेजेंगे उन्हें, उन्होंने कुछ नहीं, उन्होंने उनके खातों में कुछ नहीं जाना। उन्होंने कहना भाई आपने करवाई होगी, अपनी तरफ करवाई होगी, हमें नहीं पता। बस करम है यार, बच गए। अब ना Vikas here. जी जी विकास भाई। Can we deploy our Flask app over there in this domain? यार you can deploy GitHub any single line of code there. Okay. No, this is the simple HTML files over here. So, Okay, you are asking can that can I we- deploy Flask. a API or something, right? Yeah. Basically this is a GitHub page. As a student you have access to deploy even API, but I think that you will use GitHub Action, some features of GitHub Action for that. Moreover, I can confirm you about this in a few minutes or in your personal message, because I am also not sure about it, but yes. Okay. One last question. Okay. One last question. Okay. Can we get the virtual machine from GitHub as Yes, like Azure? a good question. Let me show you how you can get a virtual machine. If you go to GitHub Developer Pack, let me show you the Azure services. Here is the Microsoft Azure services. I will show you mine. This is my friends, so I do not want to utilize such services right now. Let me go. Okay, just GitHub Developer Pack. Okay. So okay, if you go here and just a minute, and Microsoft Azure, and okay, so let me sign in first. Again, get your developer pack. Okay, go here on the Microsoft Azure. When you sign up for GitHub developer pack, then simply go to Microsoft Azure and click on it. Get access by connecting your GitHub account on the Microsoft Azure, right? Then it will redirect to you this page. You can simply start free. Click on start free, right? It will show you the Azure sign up page. Because I opened it from my phone, so some of the slides there is no some of your mics has been opened. Gulzuman, can you please let me in? Okay, so here you go, use another account and you will go click on here. Okay, you will click on here, sign up with GitHub, right? Then after that just forget this page. This is my personal some issues, but this will not be in your case. Just you follow the step with your university email. Remember one thing, this is very important. Use your university email. Even at Azure or any other services that GitHub provide, use your university email. That's the main thing. So if you go next, okay, then it will redirect me to the Azure services in a couple of seconds. Just wait it. Okay. Will credit card required for this? Sorry? Credit card. No, you do not need any credit card. There is already been some credit against your account, free of cost. Let me click on it. Okay, just it's a portal. I will show you how the credit has been assigned to your account. Okay, so this is a dashboard of Azure. Here you can see this is Azure for student. So if we go here and click on subscription, right, then you can see you are subscribed for Azure for student. It's currently been active and it is for 1 year, and $150 as per my knowledge has been given to you every single month. So if you can see okay, I do not know where the you can see the package.
So that's it. You have been assigned Azure services with your university email. Just forget mine because it is showing my personal account. This is some other issues, but you need your university email for Azure services, right? Am I clear? Okay. So you can easily access those. First you need a GitHub developer pack, then you can access those services. Okay, any other question, guys? Oh, sorry. AWS is Sorry. AWS services. Will we get AWS? Sorry. Currently, GitHub Developer Pack has no any kind of AWS services. In our email, university email. Okay. You are asking that if we can access AWS services with our university email. So, Yeah. as per my knowledge, till now we cannot have any free services like the proper services. Yes, we can get a little bit services for a day or twice, but not like a whole year. Moreover, I can confirm you after some discussion with my friends in the AWS. So yeah, I will confirm you in a couple of minutes or hours. Any other question? No, thanks. Sure. So any of the guys here in the meeting, do you guys have any other question? Okay, so let's wind up this meeting. So this is it for today. Thank you so much for attending. One more thing, that the day one, that is hybrid, in which I talk all about the Google Summer of Code, etc thing, like Microsoft Student Ambassador things. All of those things will be discussed tomorrow, where I will show you how to avail all of these resources, because on the first day, due to some technical issues, I was not able to show you the things in detail. So tomorrow we will have a session, so I request all of you to please attend the session, where I will show you like all the things in detail, that how you can avail a certificate of Microsoft, how you can apply for Google Summer of Code. Because if you go at Google Summer of Code website just now, then you will not be able to, maybe you will, but I think you will not be able to find like organizations and how to apply, and the things that are needed before you apply. All those knowledge will be discussed in detail tomorrow. Let me check the chat thing. Okay, thanks for arranging the session. I missed the first half hour. I will provide all the detail about this session. I have a recording. I will upload it on YouTube or some other platform. Then I will share a link in the Discord channel and this in this meeting chat as well. So yeah, you can access that recording. Okay, please share the recording. Yeah, Daniel Rashid, you can access the recording in the Discord channel and in this meeting. So if you haven't, if you are not already in the Discord, then I advise you to join the Discord server. So there is no question, right? Okay, so I am ending this meeting. Thank you so much, guys, for attending this session. Thanks again. So Allah Hafiz. And Ramadan Mubarak. I hope this Ramadan bring all the happiness in our life and all of things. Thank you so much, all of you guys. Thank you so much, bro.